students, मैं डॉक्टर उमा राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर। आज हम एमएससी प्रीवियस के पेपर 4 में यूनिट 1 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था फूड स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड में, आज हम फूड स्पेसिफिकेशन सपोर्टिंग फूड प्रोक्योरमेंट के बारे में जानेंगे। A food specification is description of food item which is going to be purchased. While food item are not often through as a specification in our mind, we don't think about the type of product which are needs, and this is usually driven by the recipes that are used in menu planning. In order to obtain food at its highest standard, product have to go through a process whereby samples are tested against the specification known as quality control. Using food specification serves a number of reasons in food service. जनरली हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें उसकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं होता है, तो हर प्रोडक्ट पे ही एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट लगी हुई होती है। इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह पदार्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसको कैसे कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, कितने टाइम तक वैलिड है ये। इस तरह की जानकारी हमें फूड स्पेसिफिकेशन के तहत प्राप्त होती है। दे हेल्प डिटरमाइन द टाइप ऑफ फूड आइटम विच नीड टू बी परचेज्ड। दे डिटरमाइन द स्कोप और रेंज ऑफ फूड आइटम अंडर ए कैटेगरी विच विल बी परचेज्ड। दे सेट अप द परचेजिंग पैरामीटर विच आर नीडेड। They can also help to eliminate tricky menu planning situation when a customer wants additional product which are out of the scope of purchasing. We see this in aged care where a resident wants a specific type of product. Food specification requires the catering department to think about what each food ingredient will look like. For example, the type of meat cuts, type of eggs, milk, yogurt and cells which could be purchased for the menu. Food specifications can also be determined by their popularity on the menu by clients and customers. Food specification is especially valuable for high-end menu items such as meat. Meat should be of good quality, of the required quantity, and portion is essential. Specification for food have following components: item name in full to describe the product, for example full cream milk. Description of the item is the weight, portion, size, whether the item is fresh, frozen, cannot, and how it is packed. Quantity, the amount that is required to be ordered, being singular or as caterans. Quality,
Description of the minimal acceptable characteristic for the product. What will be used to make meals. Price per unit and total cost. Other items may include how it is packed, delivery instruction for food, safety, storage and heating instructions. By understanding food specification, this establishes more efficient procurement and allows for benchmarking of food cost. बेंचमार्किंग मतलब जो अपने प्रोडक्ट पे जो सरफेस पे जो कॉस्ट अंकित होती है. बेंचमार्किंग फूड थ्रू procurement process ensure that food costs are always the best they can be and provide stability to menu budget. For additional help, allocating budget, you can use services such as this to calculate most of food. Whether you formally undertake food specification as part of your menu planning process or not, the fact is that food specification help reduce cost, keep your menu planning and meal delivery standard high and determine the quality of your food service operations. Minimum mandatory labeling of packaged food must have the following detail. name of product, weight, जो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, नेम एंड एड्रेस यानी मैन्युफैक्चर है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पे बना है, दिल्ली में बना है, बॉम्बे में बना है, पैकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है और वेंडर्स, इन सभी के बारे में नाम के साथ, एड्रेस के साथ लिखा हुआ होता है हमारे पास. कोई भी हम किसी भी फूड का पैकेट देख लें, बैच नंबर भी लिखा हुआ होता है, डेट मैन्युफैक्चरिंग है, पैकिंग है, बेस्ट यूज़ डेट, वेज है, नॉन वेज लोगो है, FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन, न्यूट्रिशन वैल्यू. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि हमारे पास मैगी का पैकेट ही है, उसमें नाम लिखा हुआ होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका एक बैच नंबर होता है. जब तक प्रोडक्ट में एक बैच नंबर ना हो वो एक लीगल प्रोडक्ट नहीं माना जाता है. डेट लिखी हुई होती है कब तक आप उस पर कब बना है वो, और लास्ट डेट उसकी क्या है कि आप कब तक यूज़ कर सकते हो उसको. उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से डले हुए हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या है, ये सभी हम देख सकते हैं इस पैक पे लिखा हुआ होता है. अब हमारे पास है rework and control of rework, handling of rework at back to be done in such a way to avoid cross contamination during processing, handling and storage. Rework shall be clearly identified and or labeled to allow traceability. Traceability records for rework shall be maintained. All rework should be certified by the QA department before
QA means Quality Assurance Department. Before reincorporating, their work classification or the reason for rework designation shall be recorded. जैसे कि प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्शन डेट, शिफ्ट, लाइन ऑफ ओरिजिन, शेल्फ लाइफ एक्सेट्रा. Segregation requirement for rework shall be documented and met. Control on non-conformance product. The organization shall establish and maintain documented procedures that specify appropriate action to identify and eliminate the cause of detected non-conformalities, to prevent recurrence and to bring the process or system back into control after non-conformity is ensured. These conformities encountered. These actions include reviewing non-conformities, including customer complaints, reviewing trends in monitoring results that may indicate development towards loss of control, determining the cause of non-conformities, evaluating the need of action to ensure the non-conformities do not recur, determining and implementing the action needed, recording the result of corrective action taken, reviewing corrective action taken to ensure that they are effective. Corrective action shall be recorded. Food transportation. Vehicle only FSSAI registered transporter shall be used to transportation. The dispatches of finished goods must allow FIFO or FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट सिस्टम. Conveyance or container used to transporting shall be kept clean and maintained in good repair and condition to protect from contamination, and shall be designed and constructed to permit adequate cleaning and disinfection. Where direct control and food occurs, material used in career construction should be suitable for food. यानी ये जितना भी फूड ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास में जितना कि उसका बनना इम्पोर्टेंट होता है. मतलब आप बनने के बाद किस कंटेनर में रख रहे हो, उस कंटेनर में रखने के बाद उसमें कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए. और एक डिस्पैच नंबर होता है कि यहाँ से ये फूड इस डेट को आप यूज़ ले सकते हो, वो डिस्पैच नंबर होता है. और जो भी कंटेनर है उसका डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो इस फूड का इन्फेक्शन ना करे. ऑल व्हीकल्स शैल बी प्रॉपरली कवर्ड विद द tarpaulin or closed container. Finished product box are kept at the prescribed maximum height to avoid damage. यानी उसको आप अच्छी ऊंचाई पे रखें जिससे उसमें डैमेज कम से कम हो. केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट कंडेंसेशन वेयर अनलोडिंग spices,
from a refrigerated vehicle or while taking out of a cold storage। इस प्रकार के हमारे पास ये कई स्पेसिफिकेशन है। ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल है, यहाँ ये दे रखा है, इस एग्जांपल है, जैसे इंग्रेडिएंट क्या है, कंट्री है, वेट कितना है, इसका ट्रिम पैक्ड है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स दे रखा है, डिलीवरी टेम्परेचर, मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर टू एक्स ऑर्थो। इस तरह से ये कुछ स्पेसिफिकेशन है हमारे पास में। और फूड स्पेसिफिकेशंस एग्जांपल्स सैंपल्स, ये हमारे पास सैंपल्स है ये। उसके बाद हमारे पास हाइजीन और कंट्रोल इन स्पेसिफिकेशन प्रोसेसेस, यूज मैकेनिकल ड्राइंग टू द प्रिपेयर स्पाइसेस। ये एग्जांपल है, जैसे जो भी अपने पास मटेरियल बनाए प्रॉपरली अपने पास हाइजीन होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर वगैरह इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्राई होना चाहिए वो रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसेस। ड्यूरिंग drying time should be reduced as much as possible by using optimal drying condition to avoid fungal growth and toxic production. To prevent the growth of microorganisms, especially mycotoxin producing molds, a safe moisture level should be achieved as rapidly as possible, and mechanical drying methods should be used instead of natural drying or air drying where possible। ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए एक मॉइस्चर लिमिट है एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये भी हमारे पास हाइजीन जो कंट्रोल है उसमें बहुत उपयोगी है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो हमारे पास उसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। हम जैसे हमारे पास गैसिया होल है, इसमें जो अपने पास मैक्सिमम मॉइस्चर की जो लिमिट है परसेंटेज में वेट बाय वेट में है, ये है 12.0%। क्लोव है हमारे पास में 12.0%, कोरिएंडर है, धनिया जैसे कि 9.0%। इसी प्रकार से हमारे पास ये कई एग्जांपल है, जैसे ये मस्टर्ड है हमारे पास है, इसका एग्जांपल है 10%, ब्लैक पेपर है 13%, टर्मरिक है 12%। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।